All right, Rahul Gandhi in Haryana, a poll-bound state, takes a big attack at the BJP government at the centre on the Agniveer scheme. He points out at the Agniveer scheme, claiming that this is only done to support Adani. Rahul Gandhi says Modi government wants to steal soldiers' pension. Modi government wants to take away martyr status. While speaking about the Agniveer scheme, Rahul Gandhi taking sharp jibes at the BJP government, saying Modi government wants to steal soldiers' pension, and this Agniveer scheme itself is formulated, rolled out to support Adani. Here's what he says. ये अग्निवीर स्कीम नहीं है, ये गलतफहमी में मत रहिए। ये जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है, सीधी सी बात है। जो नॉर्मल जवान होता है उसे पेंशन दी जाएगी, पूरी जिंदगी उसे पेंशन दी जाएगी। जिसको अग्निवीर नाम दिया है उसे पेंशन नहीं मिलेगी। मतलब अग्निवीर से उसके जेब से पैसा छीना गया है। कहां गया? अदानी जी की जेब में। अग्निवीर भी अदानी जी की मदद के लिए किया गया है। अग्निवीर को अच्छा सा नाम दिया है, मगर इसका कोई मतलब नहीं है। अग्निवीर की सच्चाई यह है कि हिंदुस्तान के जवान के जेब में से नरेंद्र मोदी जी पेंशन छीनना चाहते थे। वो चाहते थे कि अग्निवीर को पेंशन ना मिले, ट्रेनिंग ना मिले, इसलिए उन्होंने अग्निवीर नाम दिया और कहा तुम लोग अग्निवीर बनो, मैं तुम्हारी पेंशन छीनता हूं, मैं तुम्हारा भविष्य छीनता हूं, मैं शहीद का दर्जा छीनता हूं। और यही काम हरियाणा में रोज हो रहा है। अभी हम परिवारों से मिले, उन्होंने हमें बताया कि अब नई चीज चली है, परिवार की आइडेंटिटी कार्ड। सारे नाम एक साथ कर देते हैं, आमदनी बदल देते हैं, जो भी आमदनी लिखनी होती है लिख देते हैं और सरकारी स्कीमों से आपके नाम हटा देते हैं, सरकारी नौकरियों से आपके नाम हटा देते हैं। All right, let me go across to Maushmi Singh joining us live for more on that. Maushmi, you're closely tracking all the campaign happening in the build-up to Haryana's elections. We see just a day after Home Minister Amit Shah, along his campaign trail, assured the people of Haryana that Agniveer scheme is done only to strengthen and ensure that the army has young men participating in it, and assures a job with pension for all those Agniveers. Here you have Rahul Gandhi raking the issue up yet again, saying that this scheme is formulated only to support Adani. Right, Nabila, and this actually an indication of how bitterly and how closely the battle of Haryana is being fought, because you know you have the assurances of the government and you have attacks and counter-attacks that are flowing in every minute in real time, and every rally there are fresh barb of attacks. Importantly, the Congress wants to cash in on the Agniveer scheme and the sentiments that are against the scheme amongst the youth being a very core vote bank in Haryana, and thereby Rahul Gandhi taking that attack right to the doorstep of the top leadership of the BJP, saying that it's to benefit Adani, is why the Agniveer scheme is launched and has been brought in, and Priyanka Gandhi taking a leaf from Rahul Gandhi's attack, saying that unemployment is a raging issue that has actually taken away the self-respect of and respect of the people of Haryana. So very interesting power play there. Thanks very much, Maushmi, for joining us with those details.